Dear future doctors, welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today the topic of discussion is role of water and carbon dioxide in photosynthesis. Let's start lecture. Now, dear students, the role of water in photosynthesis. So, as we have discussed in the equation of photosynthesis, water is the major. It is the major photosynthetic reactant. It is one of the major photosynthetic reactant. And dear students, the water is a source of oxygen that is used by organisms for aerobic respiration. तो डियर स्टूडेंट्स, इसी बात को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हाइपोथेसाइज किया था 1930 में वैन नील ने. सो वैन नील्स हाइपोथेसिस in 1930. So he hypothesized that, or he proposed that water is the source of oxygen liberated during photosynthesis. And he proposed this while he was studying the photosynthetic bacteria. He said that the bacteria uses carbon dioxide and hydrogen sulfide, but does not release oxygen. Instead, it releases sulfur. Clear? So, आप पढ़ चुके हैं H2S plus carbon dioxide. It will be used to make the sugar plus water plus the sulfur. तो यहाँ से उसका दिमाग क्लिक किया नील का कि जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वो H2S को यूज कर रहे हैं एज हाइड्रोजन डोनर और रिलीज क्या कर रहे हैं सल्फर, और कार्बन डाइऑक्साइड भी इस्तेमाल हो रही है एज अ रिएक्टेंट, बट ये ऑक्सीजन लाइब्रेट नहीं हो पा रही. तो इसके बिहाफ के ऊपर उसने फिर हाइपोथेसाइज किया कि प्लांट्स में, इन प्लांट्स एंड इन द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनमें वाटर इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन. क्लियर? इसके बिहाफ के ऊपर तो लेकिन खुद प्रूफ नहीं कर पाया, ये जस्ट उसने हाइपोथेसाइज किया. देन in 1940, Ruben and Carmen were the scientists who did experiments to check the hypothesis of Neal, that whether carbon dioxide is the source of oxygen liberated during the photosynthesis as a byproduct or water. So it was made possible. It was made possible because of use of
radioactive tracer O18 for the very first time. पहली दफा जब रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो ट्रेसर है O18, नॉर्मल ऑक्सीजन जो होती है O16 होती है, तो O18 पहली दफा इसका जो इस्तेमाल है वो लाया गया 1940 में। तो तब इनके कामन और रूपन 1940 में इनके दिमाग में आया कि क्यों ना अब हमारे पास वो एक रेडियो एक्टिव उसका आइसोटोप मौजूद है, हैवी आइसोटोप मौजूद है, तो इसके एक्सपेरिमेंट्स को चेक किया जाए। तो उन्होंने लैब के अंदर दे सिंथेसाइज्ड water with this radioactive isotope and carbon dioxide as well. Clear? ये उन्होंने लैब के अंदर सिंथेसाइज की in lab and made two plant groups, दो plant groups बनाए to check whether the statement of NEET is correct or not. So here is the plant group 1. So जो फर्स्ट ग्रुप है उसको दिया गया वाटर, उसकी ऑक्सीजन को रेडियो एक्टिव बनाए, जो इसमें ऐड किया गया था रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन के जरिए जो वाटर बनाया गया था उसको एक फर्स्ट ग्रुप को दिया, और इसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नॉर्मल रही। तो डियर स्टूडेंट्स, चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड के पास भी ऑक्सीजन है, वाटर के पास भी ऑक्सीजन है, सो ऑन दैट वेरी बिहाफ जो है वो हाइपोथेसिस दिया था नील ने कि क्योंकि वो तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पे काम कर रहा था, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो तभी वो भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर रहे थे बल्कि वो सल्फर रिलीज कर रहे थे, तो वो H2S यूज कर रहे थे इंस्टेड ऑफ H2O। सो दैट इज ऑन दैट वेरी बिहाफ। सो व्हाट हैपेंड, these plants synthesized sugar and water and oxygen liberated, वो in the oxygen liberated had radioactivity। तो इसकी ऑक्सीजन जो है वो रेडियोएक्टिव है। तो आपने रेडियोएक्टिव ऑक्सीजन किसमें इन्होंने इस्तेमाल की थी? दैट वाज इन द वाटर। द सेकंड ग्रुप, द सेकंड ग्रुप, प्लांट ग्रुप 2, they used the water with normal oxygen O16 and the carbon dioxide CO2 with the radioactive isotope, and what did they found? That the radioactivity was found in the carbohydrate plus the water formed as a byproduct, while the oxygen liberated didn't have any radioactivity। तो क्या ख्याल है फिर, तो कौन सा ग्रुप सही था? सो मतलब कि इनमें से ऑक्सीजन जो है कौन लाइब्रेट करता है? वाटर। मतलब कि जो वैन नील्स का जो हाइपोथेसिस था that water is the source of oxygen during photosynthesis, that was correct. Okay, so this is how they made it. Now dear students, the role of carbon dioxide in photosynthesis. तो dear students, you know water और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही मेजर रिएक्टेंट हैं। वो 4 रिएक्टेंट्स हैं जो हमने पढ़े। एक तो हमने पढ़ लिया फोटोसिंथेटिक रिएक्टेंट्स, द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, दूसरा वाटर, और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड। इन तीनों में से कोई एक भी एब्सेंट हुआ तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और चौथा है लाइट। इन चारों में से कोई एक भी एब्सेंट हुआ तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है? तो डियर स्टूडेंट्स, यू नो ड्यूरिंग लाइट independent reactions means the dark reactions, the carbon dioxide is reduced to sugar. Clear? It means if there is no carbon dioxide, no Kelvin cycle, and no sugar will be formed। तो पहली तो बात ये है कि दूसरा जो फेज है फोटोसिंथेसिस का, उसमें मेजर रोल ही कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर ना हुई तो फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाएगा, सेकंड स्टेप नहीं हो पाएगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है इनटू शुगर्स। क्लियर? एंड जहां तक बात है इसके सोर्स की, sources of carbon dioxide. So for terrestrial plants and for
aquatic plants, the sources are different. In the for terrestrial plants, mean the land plants, it is atmospheric carbon dioxide, while the aquatic plants, they use the carbon dioxide dissolved in water or in the form of soluble carbonates and bicarbonates as a source of carbon, as a source of carbon, they use them, ठीक है? और in air, carbon dioxide is 0.03% to 0.04%. Clear? Or the opening and closing of stomata is responsible for transport of carbon dioxide into the plants. Clear? And stomata are the pores guarded by guard cells whose opening and closing is controlled by internal biological clock. तो उसकी इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक जिस टाइम पे सेट है, आप उस वक्त प्लांट को अंधेरे में भी रख देंगे तो स्टोमेटा उसके ऊपर रहेंगे, ठीक है? द स्टोमेटा आर ओपन ड्यूरिंग डे while partially closed during night. ये MCQs के लिए मार्क कर इसको, पार्शली क्लोज होते हैं, ठीक है, रात के वक्त मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होते. और one thing more, the stomata are only 1 to 2% of total volume of a leaf, but is enough for gaseous exchange, especially of the carbon dioxide, if we talk about that. Okay? So another MCQ is here. MCQ, and these are adjustable pores guarded by guard cells and controlled by internal biological clock. And their percentage in air, their source of carbon, and these sources as well, the carbonates and bicarbonates, and carbon dioxide dissolved in water. So these are the MCQs as well. Or one thing more is related to this, that excess of carbon dioxide in plants leads to closing of stomata and vice versa. मतलब कि हाई कंसंट्रेशन होगी प्लांट के अंदर तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, लो कंसंट्रेशन होगी तो स्टोमेटा विल बी ओपन. क्लियर? एंड द कार्बन डाइऑक्साइड enters the stomata when they are open, and they enter into the mesophyll cells, cell wall, and from here they diffuse into the chloroplast, So it is now the chloroplast, वहाँ पर जो इसका स्ट्रोमा है वहाँ पर इसको फिर इसको रिड्यूस किया जाएगा into the sugars.